Jitendra ji, now I have this number saved in my system because I had come to your hospital with my father's file, and there was this who had treated him. Now I need you to help me. Now this is a help because I don't know if you can, but the Mediclaim people are not reimbursing my father of the Exchiva injection that he has taken under the prescription of Dr. Suresh Advani. So taking an injection does not require admission into a hospital. It can be taken in the house. Reimbursement should be for the injection which is prescribed under the doctor. Now, he is not getting reimbursement saying that तुम hospital में भर्ती क्यों नहीं हुए. This is really, really wrong practice by the Mediclaim people. Mediclaim reimbursement should not be based on hospital. You call check-in and check-out because hospital is not a 5-star. Hospital is a hospital. Patients should check into the hospital only when it is needed and required. So this practice by the Mediclaim is very wrong. And so I would request you to give me a letter saying that the Exchiva injection which was prescribed by your doctor sitting in your hospital does not require daycare admission and it can be administered at home, and if the patient is comfortable at home, they have taken the injection at home. If the medical reimbursement should not happen on the basis of daycare admission and OPD admission and check-in of the hospital, but it should happen on the basis of the treatment plan or the cost of the injection. So, my father just sent me an article where the city's air quality has worsened. Respiratory illness increased because of the worst air quality. AQI above 150 for the past 6 days, imagine. और इस सब नॉनसेंस में मेरे ऊपर धूल मट्टी फेंकी जा रही है. And Sangram is doing nothing about it. He just wants to be the good cop and call me crazy. Anyways, I've done my duty. I have put his food on the table and it's covered with this net. That's all I can do. I've made sweet potato and methi for him. I've given him salad and it's done. My job is done. Now let me concentrate on my work. Now my father has talked to Jitender and he has been told that today is a holiday, but the hospital must be on. Maybe Jitender must have taken a holiday. Okay, let them figure this out tomorrow. Because if I have to go and collect the letter, I'll go and collect the letter. But hospitals, airports, railways, everything works even on holidays, and they should work on holidays because these are essential places, institutes, industries. Yeah. अब इन्होंने ये जवाब दिया था मुझे 9 दिन पहले. ठीक है, आज तो छुट्टी फिर मना रहे हैं ना सब लोग. कल कॉल करती हूँ. So today is 25th. It's a holiday, but I'm just trying to upload it. Okay, I've uploaded this. Now birth certificate. You're telling me to upload. So this is my birth certificate. I'm uploading this. Proof of residence. I'm uploading this. Proof of income. My husband's 3 years income tax. Uploading. Proof of health certificate. Both of us got our health medical certificate. And marriage certificate. This is the marriage certificate. Okay.
Now I have saying that it's all correct. I'm trying to view. Can I view it? Not able to view what I have uploaded. Okay, but I'm not able to submit this. Okay, look at this. Let's do this again. So here, no, I've sent you a couple of pictures. This picture is nice, but we can change the home pictures. क्योंकि यहाँ पर अभी तक वो न्यूज़ का लिंक भी आपने अटैच नहीं किया. दिस पिक्चर इज़ नाइस. येलो के बहुत पिक्चर्स भेजे थे. दिस पिक्चर इज़ ऑल्सो नाइस, बट वी कैन कीप इट एट द एंड. This is also nice, but I wanted you to use the new pictures. This is not so good. This also I don't like this picture. We need to remove this picture. बहुत boring है. The new pictures I've sent you horizontal. एंड न्यूज़ में अभी लेटेस्ट न्यूज़ नहीं आई है. जैसे अभी मैं कोई इवेंट में गई थी, कोई टीवी का कोई शो इवेंट था, कुछ रेड कार्पेट जैसा कुछ था, तो वो पिक्चर्स, वो न्यूज़ वेबसाइट के ऊपर अपने आप आ जानी चाहिए. सो वो लिंक आप कैसे कर सकते हैं, प्लीज़ लेट मी नो. आई अंडरस्टैंड टुडे इज़ क्रिसमस, बट आई प्रिज्यूम अगर आप काम कर रहे हैं तो बता दीजिएगा. सो वी हैव कम टू अ नर्सरी in Versova so that we can get a paid for my terrace grill, so that थोड़ा shade greenery वाला हो, tarpaulin वाला नहीं. So let's see. छोटे छोटे आपको नीचे पूरा घान करके, जैसा कि एक पे हाँ 5-6 करके लगाना पड़ेगा, और ग्रोथ उसका फास्ट करने के लिए गुड़ाई उड़ाई करके करना है. हाँ, तो मेरे एक माली ने ऐसा कुछ 5-6 पॉट्स लगाए हैं और उनकी लड़ियां ऐसे बांधी है ग्रिल के ऊपर. अब वो बारिश में जितना उगना था उग गया है. अब मुझे कुछ और भी एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि क्या है, बारिश तो बंद हो गई है, तो वो तारपोलिन मेरे को ऊपर नीचे करना है या चढ़ाना है तो काटना पड़ेगा. तो उसके पहले मुझे कोई बड़ा चाहिए. तो मुझे पता है कि आप छोटा दोगे, बोलोगे चढ़ाओ, बट अगर आपके पास कुछ रेडीमेड है जो थोड़ा मतलब 8 साल का है बच्चा, 10 साल का है बच्चा, उसको फिर हम उगा तो सकते हैं. नंबर पे जो स्पेस है ना, हाँ, खाली मेरे को फोटो भेजिए. ठीक है. ठीक है. हाँ, मैं अगले मंडे को साइड से जाऊंगा. ठीक है. हाँ, तो मैं आपको बड़ा मधुमती अगर आएगा तो फोटो भेजूंगा, और मॉर्निंग ग्लोरी आता है, हाँ, उसका आएगा, और बहुत सारे ठीक क्रीपर है. है जो 6 फीट 7 फीट का होता है, उसको निकाल करके उसमें बांध सकते हैं. हाँ, तो फिर क्या पकड़ लेगा. हाँ जी. क्योंकि क्या एक 2 साल का बच्चा और एक 8 साल के बच्चे में फर्क है. बहुत फर्क है. तो मुझे 8 साल का बच्चा हाँ जी, चाहिए. ठीक है, आप अपना नंबर दे दो. So I'm trying to capture the photo of the nursery, and WhatsApp is doing this fake drama. The screen capture is blocked because you have to protect everybody's privacy. They are the biggest liars on this planet Earth. मैं फ़ोटो ऐसे ले सकती हूँ तो कर रहे हो, तो तुम्हारे स्क्रीन कैप्चर मना करने से क्या तुम प्राइवेसी बचा रहे हो? एंड दिस इज़ अ पब्लिक बिजनेस, सो व्हाट इज़ द privacy angle related to a public business information? Stupid people, man.